Hi guys, welcome back to my channel, and today I'm going to tell you how you can learn sections, subsections, rules, acts, names, numbers, facts, dates with the help of Google Sheets, and how you can use them to learn them effectively, faster, and practically learn them anywhere you want. So let's get started. So before starting, I would like to say कि the best way to remember things is to recall them. ठीक है, आपको एक्टिवली माइंड लगा के उसको वापस याद करना है, रिकॉल करना है. आपको सेक्शन 33 का आंसर क्या देखना नहीं है. तो अगर ये क्वेश्चन है और आंसर है दोनों साथ में देख रहे हो तो आपके माइंड में कुछ नहीं जा रहा है. यू हैव टू सी द क्वेश्चन, देन एकदम माइंड में एनर्जी लगा के रिकॉल करना है कि वो क्या था आंसर. अगर नहीं समझ में आ रहा है तब देखना है आंसर. दोनों साथ में कभी भी नहीं देखना है. दैट इज़ अ फेटल फ्लॉ. कभी ऐसा मत कीजिए, दोनों साथ साथ मत देखिए. पहले क्वेश्चन रिकॉल, अगर नहीं हो रहा है तो आंसर. ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन रिकॉल. और क्वेश्चन को मिक्स मैक्स करते रहो कि ब्रेन एक पैटर्न्स में ना आ जाए कि ठीक इसके बाद ये इसके बाद ये. इट शुड ऑलवेज बी सरप्राइज, इट शुड ऑलवेज बी एक्टिव एंड एक्टिवली यू शुड रिकॉल. एंड दिस ऑलवेज बी एफर्ट in revising. Revision should not be easy. There should be some effort involved. तभी आपका ब्रेन काम तभी रिमेंबर एवरीथिंग. सो सो व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज आई विल शो यू एग्जांपल ऑफ हाउ आई क्रिएटेड शीट्स फॉर लॉ एंड टैक्स and how this helped me revise and understand everything in a much faster and a very lesser time and in a much effective way also. So to illustrate an example, we'll quickly open Google Sheets, that is sheets.google.com, and I will take you through company law. Why company law? Because it requires more of recall, more of remembrance than of actual thinking and actual insights. Because you need to remember things, recall them at that point. So इसके लिए you need memory. You need memory. You need to know things. You need to know rule number. You need to know section numbers. Multiple things. So I'll show you my sheet. This is the sheet which I have prepared for my company law. As you can see here, I'll just quickly for you guys. As you can see here, यहाँ पे I had prepared company law chapter wise, chapter 2. So this is my space repetition sheet which will come back later. Then here if you can see how I had put it. section 1 2 3 4 5 subsection definition. सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है ऐसे करके मैंने बहुत से सेक्शंस बनाया था. यहाँ पे फॉर्म नंबर है, ये फॉर्म नंबर है, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इवेंट्स है, इवेंट्स के लिए क्या रेजोल्यूशन चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि सोचो कि मुझे 211 217 सब याद करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कलर दीज टेक्स्ट एज वाइट. तो यहाँ पे आई हैव टू रिमेंबर व्हाट इज subsection 1, what is 211 body corporate, ठीक है, what is 217 okay defense company, ठीक है, what is section 5, ठीक है, what is section 10 prospectus, ठीक है, section 31 क्या है, ठीक है. as a this was a primary structure. I'll tell you how it is actually executed. So I'll take you to my chapter, one of the toughest chapter इसका मुझे section subsection rules सब याद था. this is a stake capital and debenture. So this is chapter 4. yeah, यहाँ पे रिटर्न फॉर्म. बेसिकली सेव जिस करना है. यहाँ पे कॉलम ए में है क्या याद, कॉलम ए में है पर्टिकुलर्स, कॉलम बी में कैंसिल. तो कॉलम ए में ऐड पुट इन व्हाट आई नीड टू रिमेंबर, कॉलम बी में क्या रिमेंबर करना है, फॉर्म नेम SH3 क्या क्या है, रूल क्या है, कवर्ड है. ग्रुपिंग देन यू हैव कितने सेक्शंस है यहाँ पे. बेसिकली कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रेटजी अपनाना है. इसे टेक्स्ट को वाइट कर देना है. देन यू कैन इजीली रिकॉल कि 46 क्या है, 47 क्या है. एंड देन इफ यू आर कंफ्यूज तो यू नीड नॉट मेक इट ब्लैक. वापस ब्लैक नहीं करना है. यू कैन पुट योर कीबोर्ड हियर एंड सी. अच्छा इट इज 47 वोटिंग एडोशेयर्स होता है, ठीक है. दिस सेम फॉर्मेट में यू कैन रिमेंबर आराम से. ओके 282 सेक्शन 28 क्या होता है, कुछ याद नहीं है 28 क्या होता है. देन कम हियर. ओके इट मींस ओके नॉमिनल ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड कैपिटल के बारे में 28. 250 क्या होता है, नो आइडिया. ठीक है, इट्स अबाउट इशूड कैपिटल. ऐसे करके यू हैव टू मल्टीपल टाइम्स रिवाइज. एंड दिस इज आप एक कॉन्सेप्ट को आगे भी ले जा सकते हो. टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है, एज पर सेक्शन 43 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है, यू कैन सी. डिफरेंशियल रेट्स क्या होता है, ठीक है, यू कैन सी. ऐसे करके दिस इज लाइक a very fast way to revise and recall thing. कहीं भी आप बैठो, ठीक है, फोन दिस कैन बी ओपन इन योर फोन ऑल्सो. फोन पे खोला, ठीक है, पट सेक्शन में देखा, लिखा क्या था, ये देखा लिखा. अगर याद नहीं आ रहा है पट से बगल वाला टैब में गया, पट से देख लिया. तो इट इज अ वेरी फास्ट वे टू रिकॉल. सेम थिंग आई डन फॉर ऑल द चैप्टर्स बेसिकली. ठीक है, डिपॉजिट चैप्टर तो बहुत इजी चैप्टर था. चार्जेस में क्या क्या सेक्शंस आ रहे हैं. देन फॉर मैनेजमेंट मुझे छोड़ दिया था. डिविडेंड
एंड और फेवरेट ऑडिट एंड ऑडिटर्स, यहाँ पे तो सबसेक्शन भी यहाँ पड़ता है क्योंकि ये ऑडिट का चैप्टर है, ठीक है। देन इफ यू कैन ग्रुप एवरीथिंग, इफ यू कैन सी, ठीक है। देन 143 में क्या क्या आता है, देन यू अनग्रुप इट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में क्या है, 2 3 4 में क्या है, 4 6 में क्या है, दैट वे द फॉर्म नंबर क्या क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूल क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वे यू कैन लर्न लॉ, कैन बी extended to anything, it can be extended to even audit, standards of auditing, this can be extended to, I don't know, tax, very much can be extended to tax, this is very important. I could show you tax example, same thing. See, tax the same thing I had done. And then if you go to basic concept chapter 1, कि what is a proviso, what explanation, सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज ओल्ड, क्वाइट ओल्ड, बट स्टिल इट सर्व्स द पर्पस, ठीक है। क्वेश्चन से बगल में आंसर है, क्वेश्चन से बगल में आंसर है। सेम आप पीजीपी पे चल जाओ, पीजीपी पे तो यहाँ पे बहुत सेक्शंस होगा, आई रिमेंबर, यस। व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, डाल के पूरा सब, हाउस प्रॉपर्टी पे सेम थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर आप लोगों के शीट्स चाहिए तो लिंक गूगल ड्राइव का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे हर एक चीज़ का, टैक्स का, लॉ का, ऑडिट का, इंटर का, जो भी चीज़ मेरे पास है मैं सब डाल दूंगा। कॉपी करो, पेस्ट करो, एडिट करो, यूज़ इट, रिवाइज इट, रिकॉल करो, और आई एम वेरी श्योर दिस विल गोना चेंज योर लाइफ, दिस गोना बूस्ट योर प्रिपरेशन, और आप ऐसा आदमी बन जाओगे कि सब चीज़ याद रहेगा। ऑल्सो अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा और आपको कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज भाई इतना कम सब्सक्राइबर से कुछ भी नहीं होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, होप यू लाइक्ड इट, बाय बाय।